comparison between electrical charges and mass ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ comparison, that is comparison between charges or mass, mass m ਤੇ charge q. Charges are always, you can have charges as positive or negative, यानी कि two kinds of charges. ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਫ ਵਨ ਟਾਈਪ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਪ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਦੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਚਾਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ। ਇਹ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਸ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी का चार्ज है, ठीक है, उस बॉडी की अगर वेलोसिटी which is very close to the velocity of light, the mass may change but charge will remain the same, but whereas mass is, it is not invariant, ठीक है। उस तो बाद दो चार्जेस ने, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों च अट्रैक्शन होती है। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, whereas unlike charges attract each other। सो साडे कोल इन्हां दोनों दे विचली फोर्स हो सकदी है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकदी है ते रिपल्सिव भी हो सकती है। बट वेयर एज इन मास, फोर्स दोनों की इंटरेक्शन विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, और विच इज गवर्नड बाय द लॉ, दैट इज केड़ा लॉ वो यूज करते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इज देयर, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट साढ़े को आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट इज टोटल चार्ज इन a system remains conserved, charge is not changing at all, ठीक है। mass is conserved, mass conservation is there, ठीक है, but in very limited cases ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਟੂ ਲਾਈਫ 'ਚ mass is conservation, but in certain cases ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ there is a equivalence, that is called E is equal to mc square, ठीक है। so ਸਾਡੇ ਕੋਲ there is a mass energy equivalence is there, that is it is called mass energy equivalence, ठीक है। mass energy equivalence means certain cases ਦੇ ਵਿੱਚ mass can be converted back into energy, ठीक है। so there is an interrelationship between, that is possible in certain cases when you take into consideration the velocity of light, otherwise in all day to day life you have law of conservation of mass, ठीक है। so mass the conservation ਜਿਹੜਾ law है that is applicable in day to day life, or it is in certain condition, normal conditions are there, but in specific condition there is a mass energy equivalence is there। Coulomb's law of electrostatics, ठीक है। This is a law which tells us the interaction between two charged bodies, दो bodies ਦੇ ਜਿਹੜੇ charges ਦੀ interaction है वो ਕਿਹੜਾ law govern करती, that is called Coulomb's law, ठीक। let's take a one charge Q1 and another charge Q2, और ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ distance है that is R is the distance separate करता है, और let's say both the charges they are positive, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव ने दैट मीन्स दे आर हैविंग ए रिपल्शन बिटवीन देम, दोनों च रिपल्शन है, बोथ चार्जेस आर फिक्स्ड एट देयर प्लेस, दोनों चार्ज अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं, सो दिस चार्ज विल ट्राई टू पुश दिस चार्ज आउट एंड दिस चार्ज विल ट्राई टू पुश दिस चार्ज दिस वे, सो दिस चार्ज Q2 is going to push this charge out, so that means force on 1 due to 2, ठीक है, and Q2 की टेंडेंसी है
Q2 will be pushed out by this charge outward. So this is force on 2 due to 1. Okay? Force on 1 due to 2 and force on 2 due to 1. दोनों repulsion है, दोनों की distance कितना r आ गया, both charges are positive. इस point पे there is a position vector. ठीक है? So let's say there is a position vector in vector form, that is from r1 to 2. Unit vector r1 to 2. So there is a unit vector which is pointing from 1 to 2, and here is a unit vector which is pointing from 2 to 1. A point out कर देते हैं, right? So this is a unit vector, और full vector कितना आएगा साढ़े को? That is equal to r12, and here r21. That is the full vector which is pointing on this direction. Okay. So the force between two charges by Coulomb's law. Coulomb's law क्या कहता है? Force between two charges F is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. दोनों से जितना distance increase करेगा force की value कट जाएगी. If you combine these two together, so we get it is proportional to, that is Q1 Q2 by R square. ठीक है? Or we can say that force is equal to some kind of a constant K Q1 Q2 by R square. So a constant कितना आया? In order to remove the proportionality sign. So by experimental verification तो से check किया, this K has got a very special value. इन्होंने से कही 1/4 pi epsilon naught, that is Q1 Q2 by R square. ठीक है? 4 pi is constant, even epsilon is constant. What is epsilon? So this is pronounced as epsilon naught. ये denote करता है electrical permittivity. Electrical permittivity of free space. Electrical permittivity of free space. And what is the meaning of electrical permittivity of free space? ਇਹ ਦੋ charges ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ medium 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ. We have kept these charges in some kind of a medium. ਕਿਸੇ medium 'ਚ ਅਸੀਂ charges ਰੱਖੇ ਨੇ. उस मीडियम ਦੀਆਂ कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है ਜਿਹੜੀਆਂ कि एप्सिलॉन नॉट डिपिक्ट कर रहे हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल दिस टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वाटर. यू प्लेस दिस टू चार्जेस इन वाटर, पानी 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਚਾਰजेस ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਇਫ ਦਿਸ ਚਾਰजेस ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ. ਐਂਡ ਇਫ ਦਿਸ ਚਾਰजेस ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट here it means what, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, these charges are kept in vacuum. So for the sake of simplicity, here epsilon means it is a collective of free space. So that means you have kept these charges in vacuum. ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਜਾਂ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ. So that is why forces become like that only. ਠੀਕ ਹੈ? Now using Coulomb's law, force on 1 due to 2 vector form. Vector form. We are using now vector form. Force on 1 due to 2. So 2 has a tendency to push this charge out, outside this way. So it will be putting up a constant 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is करके because charge is time vacuum च नहीं. ठीक है? It is product of two charges Q1 Q2. Both charges are positive, so it will be a positive here. And square of the distance. Now for a vector notation, force on 1 due to 2, it is on this side. So this unit vector will point out this way. That is, the direction of the force is from 2 towards 1. So this is a unit vector. So unit vector पे किस तरह लिखते हैं? That is vector divided by its magnitude. ठीक है? Vector divided by its magnitude. So this is called the unit vector. Similarly, force on 2 due to 1. Force on 2 due to 1. So 2 has a tendency to go out by whom? By this charge. So a charge की होगा 2 बाहर जाना जाएगा. So we'll gain 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Now here unit vector. So here the tendency is to go out. So we'll use this vector here. That is R
1 2 unit vector, where r1 2 unit vector is what? r1 2 full vector divided by its magnitude, right? Now if you try to see this part in both force on 1 due to 2 and force 2 on due to 1 is same, ये बिल्कुल सेम है. So that means सिर्फ यूनिट वेक्टर का फर्क आ रहा है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दैट इज 1 ओनली, बट डिफरेंस किस चीज आ गया? डायरेक्शन आ गया. सो इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स 2 ऑन 1, यानी कि दोनों चार्जेस दे आर पुटिंग सेम फोर्स एज फार एज मैग्नीट्यूड इज कंसर्न. जब तक उन्होंने मैग्नीट्यूड कंसर्न आ रहा है, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है. इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज बोथ आर पुटिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज ऑन दिस. सो दिस ए पेयर्ड फोर्स, ए पेयर वाली फोर्स होगी, क्योंकि पेयर बन गया ना. सो दे आर पेयर्ड फोर्सेज देयर, सो दे आर पुटिंग वन एंड दोनों एक दूसरे पे डिफरेंट फोर्सेज लगा रहे हैं, ठीक है. सो दैट मीन्स आई कैन से दैट force on 1 due to 2 magnitude wise is equal to force on 2 due to 1 magnitude. Magnitude is equal, but direction is not equal because both have a tendency to go out. So I can say that इधर मतलब हो गया this vector is opposite to this vector, ठीक है. So what is our conclusion? Conclusion साड़ी ये आ गई. Coulomb's law states that the force between two interacting charges which are separated by a distance r is directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of the distance between them, and of course it depends upon the medium in which they are placed. कि जिस medium ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ, ठीक है. But forces are equal and opposite. That is conclusion ਕੀ ਆ ਗਿਆ? Forces are equal. Equal ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? Because their magnitude is equal. ये दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है. एंड दे आर ऑपोजिट, फोर्सेस आर ऑपोजिट. ऑपोजिट तक कितना पता चला? फ्रॉम देयर यूनिट वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई. सो फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इज देयर. बट अगर साडे को ए चार्ज पॉजिटिव होवे, ए नेगेटिव होवे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एवरीथिंग विल रिमेन सेम, हर चीज सेम रहेगी. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस विल रिमेन द सेम, बट सिर्फ क्या होएगा? सिर्फ ये ਜਿਹੜੇ ਦੋ यूनिट वैक्टर्स ने इन्हां दी डायरेक्शन चेंज होगी. उस केस की होगा? अगेन वी कैन से दैट द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, फोर्स अट्रैक्टिव होएगी, बट बोथ हैव अ टेंडेंसी टू पुल टुवर्ड्स ईच अदर. सो दैट मीन्स दिस लॉ इज ए लॉ विच स्टेट्स दैट चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट दे अट्रैक्ट ईच अदर. चार्जेस विच आर हैविंग सेम signs, that is where same signs are there, they are going to have a repulsion and they will obey that is the Coulomb's law. The point to be noted is that you see this force is inversely proportional to the square of the distance. So that means this force is inversely proportional to the square of distance is there. Same force ਅਸੀਂ discuss ਕੀਤੀ ਆ in chapter of gravitation, where again the force is inversely proportional to the square of the distance between two bodies. दो bodies the distance the square ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ. So those forces, ਉਹ forces ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ magnitude किस चीज पे डिपेंड करता है? इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दे आर कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेस. दे आर कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स. दे आर वेरी स्पेशल फोर्सेस, ठीक है. उन्हें साडे को किहड़ी फोर्स आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ. ग्रेविटेशनल फोर्स, F is equal to gmm by r square, that is gravitational force. And you have a magnetic force. If you have two magnets here, north pole and north pole, north or south pole, ਉਹਨਾਂ ਦੀ force ਵੀ ਇਸੇ law ਨੂੰ obey ਕਰੇਗੀ. So ਜਿਹੜੀਆਂ forces inverse square law forces ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, they have got certain characteristics, ਠੀਕ ਹੈ, that we are going to discuss ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ elaborate ਕਰਾਂਗੇ.